You're watching Truth versus Hype. We're outside a ration shop in the heart of tribal northern Chhattisgarh, a state which, like several others, is trying to find solutions to India's corrupt public distribution system, which for years has denied its poorest citizens the right to subsidized food. The stories you're going to hear over the next 30 minutes hold important lessons for those who are debating the National Food Security Bill far away in Parliament, both those who claim that it will solve India's hunger crisis and those who argue that in fact it will create mega corruption and sink India's flagging economy. A ration shop in Sarguja, one of Chhattisgarh's poorest districts, ground zero to witness a dramatic change. In 2004-05, what you found for Chhattisgarh was that 50% of the grain was being siphoned off. That what went, 50% did not reach people, as reported by people themselves. Whereas if you look at the figure for 2009-10, for 4 years down the line, then what you find is that only 10% is reported as not reaching them. As the first step, private traders no longer run ration shops in Chhattisgarh. They're run by gram panchayats, cooperatives and self-help groups. मैं चलाता हूँ सहायक विक्रेता और सचिव के साथ में दोनों चलाते हैं। ये जो दुकान है कोऑपरेटिव का, कौन चलाता है? आनंद गुप्ता। वो क्या है? क्या बोलते हैं, उनका पत्नी बोले तो उप सरपंच है यहाँ की। अच्छा, उनकी पत्नी उप सरपंच है। हाँ। वो चला रहे हैं। हाँ। Earlier, rations came from a private trader in another village. एक एक डीलर्स के पास 5 दुकान, 6 दुकान, 7 दुकान रहती थी और बहुत दूर दूर तक जाने पड़ते थे। मतलब 10-10 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर लोगों को चलना पड़ता था लेने जाने के लिए। और एक दिन दुकान खुलता था, एक दिन जो पहुंच पाया, नहीं पहुंच पाया, गोल हो गया। तो इस तरह काफी खराब था। और ये डीलर्स और राइस मिल्स के साथ इनका अरेंजमेंट होता था। डीलर्स और राइस मिलर के साथ बिल्कुल सेटिंग था। उनके यहाँ दो चावल ही नहीं आया, बाहर से वहाँ गोदाम से निकला और गोदाम में चला गया। मतलब आपके SBI गोदाम से निकला और डीलर्स की दुकान में चला गया और कागज बन गए। इस तरह की परिस्थिति पहले था। धान वगैरह ठीक आ जाता है। Now almost everyone we spoke to say they get their full share on time. कितना मिलता है आपको? 35 किलो। 35 किलो। 35 किलो। हमें तो 35 किलो मिल रहा है अभी। 35 किलो। अभी सरपंच के होते हुए तो उस टाइप का शिकायत नहीं आया है। मतलब कि जो भी मिल रहा है वो सबों के लिए दे रहे हैं। अच्छा, अभी मतलब और सब धान चावल सब कुछ आ रहा है? जी, शक्कर आ रहा है, चावल आ रहा है, चना आ रहा है। नमक भी आ रहा है। अच्छा, टाइम पे आ जाता है। जी। ये चावल है 35 किलो चावल। Their entitlements: 35 kilos of rice at the super reduced rate of rupees 2 to 1 a kilo every month, plus subsidized sugar and chana and free salt spelt out in walls of shops and even homes. ये लिखा है यहाँ पे दीवार पे। हाँ। किशोर दास। हाँ। 2 रुपए किलो चावल। हाँ? हाँ। To solve the problem of the poor getting left out, the Chhattisgarh government gives PDS to 70% of its population, about 30% more than the poverty line decided by the Planning Commission. कोई है यहाँ जिनको कार्ड नहीं है? On the ground, it's rare to come across complaints of those excluded from the net. सबके पास राशन कार्ड है यहाँ ज़्यादा? कितने लोग हैं? कितने राशन कार्ड हैं यहाँ? अभी तो 245 हैं। 245 परिवार के पास है। कुल परिवार कितने होंगे यहाँ? 300 के आसपास है। Greater involvement has meant greater accountability. और पहले का समय था तो काफी कम लोग भी थे ना राशन दुकान को उसके हितग्राही। अब तो पूरा गांव लगभग हो गया है। पूरा गांव लगभग हो गया है तो हर लोग मान चुके हैं कि मेरा अधिकार है। लोगों की तो उसको एक्सपैंड करने से ज्यादा लोगों को फायदा होने से एक मॉनिटरिंग बढ़ा है, एक प्रेशर बनता है। So there has been a recent study. It's an independent study. It shows that PDS has contributed to reducing malnutrition in Chhattisgarh, and it is a very good news that the child malnutrition rate here in Chhattisgarh has come down from 47% to nearly 35%, the underweight rate for under 3 children. So it is very, very significant because as we know, malnutrition otherwise was not reducing. So PDS is a scheme which is not focused on children. It is for the entire family. But it results in more food reaching children, the quality of diet going up. So even if they are giving rice, there are other things the families are now able to buy.
and PDS has shielded them from the price rise which happened especially since 2008. But it also means greater costs. Chhattisgarh has to pay the extra money from its own pocket. The total expenditure on account of subsidies in PDS comes to about 1200 crores per annum. And once your act comes And after the act, we are still enrolling additional beneficiaries. The number of ration cards is likely to go up by another 7 lakh cards. And therefore, the expenditure is likely to go up to around 1800 crores. That's quite a large amount for a small state. Where are you getting that money from? We've been fortunate that under the guidance of the Honorable Chief Minister, the fiscal discipline in the state has been exemplary. And therefore, the government is able to find more money for welfare schemes.